जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम last time I introduced you to a clip and उसमें ये जो पॉइंट्स थे मैं ये चाहता हूँ कि आप एक एक स्लाइड को मैं आपके सामने ले आऊँगा and you can take a look at them and see if you have any questions about them because these are very important and very concise points. I would suggest that we pay attention and try not to miss any of them and hopefully this will give us that first thing that I wanted us to share with each other about critical reflection. कभी भी कोई आइडिया कोई एक्शन सामने आता है तो उसके पीछे कुछ assumptions होती हैं जी. हम ये जो इस पूरे की पूरी फील्ड है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की, इसकी बेसिक प्रेमिस ये है that every statement expressing an opinion, every opinion based action, and every attitude is based on certain assumptions held by the person giving their opinion, taking that action, or having that attitude. And the next thing is that most of the time, we are not aware of these assumptions. We who have an opinion are many times not aware of these assumptions. They generally take it for granted that their underlying assumptions are unquestionably correct. प्रेमिस होता है ये कई दफा खास तौर पर मैं आपको अभी आज डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा about the kinds of assumptions there are generally we well not we Stephen Brookfield has categorized them into three kinds of assumptions. One is causal, which relates to the cause and effect relationship. The other is prescriptive, which actually prescribes something. A teacher should complete the sentence, and that would be a prescriptive assumption. A good school should, you know, complete the sentence, and you will have a prescriptive assumption. And the most basic thing, which we generally are unaware of, is the paradigmatic assumption. This is the third kind. We'll get into that. I will share with you a document which will introduce you broadly to this idea. And but इसमें ये जो point था ये वाला पहली slide का इसमें is there anything that you would like to talk about? You would like to discuss? You know, maybe इसको थोड़ा सा इसकी सर्जरी करके देखें कि क्या चीज़ जो है समझने में मुश्किल हो रही है. Maybe we can go delve deeper into that. मेरे इसमें ये क्वेश्चन या कमेंट है कि is it necessary to know all the underlying assumptions even where the consensus has been developed through some through research and the facts and figures are already there to prove it? Yeah, I think it can be a very good exercise, even if we ultimately find out that it was correct. The assumptions, the starting points, generally don't show up in researches. You know, in let's say in broader researches, they won't. They do many times. Sometimes they would. जिस तरह यहाँ पे हम बात शुरू कर रहे हैं तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये बेसिक प्रेमिस है. ये इस पूरी स्टडी की assumptions हैं जो बयान हो रही हैं. यानी अगर ये ठीक नहीं है तो फिर ये जो पूरी स्टडी है ये गलत है, ये इसकी जरूरत नहीं है. ठीक है जी. इट इज अ यूजलेस, इट इज अ रिडंडेंट थिंग. द थिंग इज दैट वी जनरली टेंड टू इग्नोर द फैक्ट. हमें मिसाल के तौर पर आपने अगर कोई किताब पढ़ी हो अबाउट डिसिप्लिनिंग चिल्ड्रन. Disciplining is a new word. You see, the earlier words used were rewards and punishments. Punishment, and then punishment was replaced with discipline. Even if you write, while पिछले दिनों I was checking my translation of the Quran, और उसमें किसी किसी जगह अगर punishment आया है तो वो suggestion देता है discipline कर दो इसको. तो वो हमने उसको replace किया है. ठीक है जी. As a more neutral word, as a more अगरचे उसमें कोई फर्क नहीं है. इसके पीछे assumption क्या है? What is the assumption behind it? I mean, why do we need to reward, punish, discipline children? Why? What is our paradigm about human beings? What is our paradigm about
or our concept about punishments and the behavior that we want to promote. Is it just the behavior that we want to promote? Because we obviously know, for instance, I'll just give you an idea. इसको आप थोड़ा सा delve करेंगे ना जब, तो आपको इसका अंदाजा होगा कि रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहता है, वो ये मानता है, उसकी अजम्पशन ये है that people basically are behaviors. A good person is good behavior and a bad person is bad behavior. And if you want to make a bad person good, all you need to do is to change their behaviors. And behaviors we can control by rewarding good behavior and by punishing bad behavior, by making the bad behavior painful for the other person, we can control the behavior. If that is all right, if that is your paradigm of what a human being is and how we should treat that person, perfectly all right. But at least now we know what to check. Is this the premise? Are you satisfied with the premise? Is it just the behavior that we want to change? Does it really make a good person if we change its behavior to from good bad to good? Are there any other things involved? Do you think intention plays a role? Do you think the motive plays a role? Do you think there are internal processes? Do you think bad behavior just emanates out of nothing, or is there something going on behind inside the person as well? ये सारी चीजें जब आप इनको कंसिडर करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, ये तो कुछ असल में ऐसा लगता है जैसे मेकअप किया जा रहा है, अपेरेंटली ठीक कर दिया जाए। अगर तो इंसान अंदर के प्रोसेसेस भी रखता है, इंटेंशंस, मोटिव्स, फीलिंग्स, थॉट्स, तो फिर उनका क्या किया जाएगा? क्या रिवॉर्ड देने से और पनिश करने से आप उनको चेंज कर सकते हैं? Will it alter? For instance, if a person feels uh, there's a tradition in Turkey, for instance, that वो कहते हैं कि मैंने पढ़ी है जी, I have not experienced it. I have not been there for long. I visited there once, but I have read this as a tradition in Turkey that when a child reaches 10, 12 years of age, there is a general tradition that he will be promised a bike, a cycle, a bicycle, if he goes to the mosque for 40 days and prays Fajr. ठीक है जी? Now, this can be a very good idea to promote. They're going to the mosque for 40 days, praying Fajr. There are certain assumptions about it. If they go to the mosque for 40 days, pray Fajr, it'll probably become a habit. But does it really mean that habits become, uh, ingrained in a person because of these rewards and punishments? Yeah, I'm sorry, Ji. I'm sorry. अच्छा जी, ये जो एस्पेक्ट्स हैं इनको सामने रखते हुए मैं ये जो बात आपकी है इसका जवाब कुछ दे पाया हूँ जी, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाई डू वी नीड टू नो about the assumptions in arguments, for instance, between us? It'll help by understanding assumptions. It'll help where am I coming from. You can actually tell me, ask me, question me, is this what you're assuming about people? you know and that will actually help me sort of review my point as well sometimes कि अच्छा नहीं, ये तो बात मेरी वाकई निकलती है इसमें से और ये ठीक नहीं लगी मुझे. So rather than just fixing our focus on what is being said, we should see what lies behind it. How is this opinion being formed? तो ये है जी जो जो मेरा ख्याल है कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपके लिए आसानी हो जाती है समझाना कि गलती किधर है. ये जब हम इसको पढ़ेंगे ना जी तो ये सामने आना शुरू हो जाएगा, हाउ इट जस्टिफाइज. नहीं ठीक है. जहां तक ये ताल्लुक है कि assumptions को पता होना चाहिए, what are underlying assumptions, it will helps to understand the underlying राइट motives as well. So यहाँ तक तो बिल्कुल clarity है. So I think when we will progress further, I think it will further clarify the जी things. इंशाल्लाह. बट एक चीज मैं क्लियर कर दूं जी, अंडरलाइंग assumptions जरूरी नहीं कि मोटिव्स को बताएं, ये जरूरी नहीं है. ठीक है जी, motives are something which probably will remain out of our bound. We probably can never tell about a motive of another person unless he shares it himself.
या हम इन्फर करते हैं कि ये इसने पिछली दफा ये कहा था तो अब भी यही होगा. So motive is something different. Assumption is the basic mental pattern of a person from where he's, presenting a viewpoint. आपको मैंने लास्ट टाइम इसकी एग्जांपल दी थी that let's say if I ask you to, let's say if I request you कि मुझे एक सेशन लेना है तो इसके लिए कोई अरेंजमेंट कर दें, फिजिकल सेशन लेना है पर्सनली आके, तो कोई अरेंजमेंट कर दें. तो आप मेरे से ये हो सकता है पूछें कि किस तरह का अरेंजमेंट चाहिए, और ये भी हो सकता है कि आप एक सिंपल क्लास अरेंज कर दें कि ये एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, आगे लोग बैठे हैं, सबका चेहरा जो है वो प्रेजेंटर की तरफ है. ये जब आप करेंगे तो इसके पीछे कुछ अजम्पशन हैं, और अगर आप ये खुद से कर दें कि आप एक सर्कल बना दें और उसमें ये कहें कि ये इन्हीं में एक फैसिलिटेटर भी बैठेगा और इन्हीं में पार्टिसिपेंट्स भी बैठेंगे, तो इसमें भी कुछ अजम्पशन हैं. यानी यहाँ पर लर्निंग के बारे में कुछ अजम्पशन हैं, यहाँ पर फैसिलिटेशन के बारे में, यहाँ पर लोगों के लर्निंग के तरीकों के बारे में अजम्पशन है. ये सारी चीजें जो है ना जी, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन यू एनालाइज एन आइडिया, व्हेन यू थिंक अबाउट एन आइडिया, you will find it very useful to go behind the idea and try to uncover the assumptions. इंशाल्लाह जिस तरह आपने फरमाया, हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे आइंदा इन मोर डिटेल. इन दो स्टेटमेंट्स के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा जी. इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर, एनीथिंग एट May ऑल. I ask one question, please? श्योर 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 जी प्लीज. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम मेरा अस्सलाम नाम शकील वरहमतुल्लाह. है जी, मोइज साहब. जी शकील साहब. So you discuss about the operant conditioning, जी. negative and positive, and you also discuss about the assumptions based on opinion of a person or attitude or whatever. But the assumptions can be wrong, or like the opinion can be wrong, and they can be correct, both ways. राइट. And बिल्कुल जी. number one point. Second point is that fact, they are normally scientifically or heavenly governed or natural, like male, female, and then offsprings coming, something like that. So sometimes they conflict each other. Opinion conflict with the fact, and our job is to promote the fact, not the opinion. राइट राइट. बिल्कुल ठीक है जी. क्वाइट राइट. But I totally agree, Dr. Saab. The thing that we were discussing here, और यहाँ पर असल में ये बात जिधर से शुरू हुई थी जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी इसका आपको क्लियर करता हूँ. यानी हमने ये बात की कि हमें इस क्लासरूम के नॉर्म्स अगर सजेस्ट करने हो एज एज पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस क्लासरूम, तो हम वो क्या नॉर्म सजेस्ट करेंगे. इसके बाद एक लिस्ट बन गई, and I wanted that list to be a catalyst to, because this whole thing that we are having over here, it relates to introducing life skills. So one of the important life skills that I wanted to introduce was to make it relevant for people to understand why do we need to understand this very important skill of critical reflection. ठीक है जी. तो यहाँ से हमने बात शुरू की, वो वहां पर जो हम डिस्कस कर रहे थे वो मैं फिर से आपसे अर्ज करता हूँ कि दैट वर नॉट फैक्ट्स, दे वर ओपिनियंस अबाउट व्हाट शुड बी द नॉर्म्स. एंड व्हेन वी एक्सप्रेस दोज ओपिनियंस, तो मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी ये कहता है कि वी शुड मेक इट, देयर शुड बी अ रूल दैट नोबडी शुड स्पीक विदाउट फर्स्ट रेजिंग हिज हैंड्स, तो यहाँ पर कुछ अजम्पशंस इन्वॉल्व है ना जी. उसको अगर हमने अच्छी तरह से गौर करना है, समझना है, तो हम उसको देखेंगे कि वो क्या अजम्पशंस हैं और पूछेंगे. ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है. एक बात तो ये कि हम अजम्पशंस गलत भी असेस कर सकते हैं, और दूसरी ये कि अजम्पशंस खुद गलत भी होती हैं और ठीक भी होती हैं. जो फैक्ट्स होते हैं, इंटरेस्टिंगली जो फैक्ट्स होते हैं वो बेसिकली they are they can be seen. I mean, they will hardly be any difference, for instance, in determining facts. Once you determine them, they will come in front of you. But most of the times, even for me, many facts are those which are my inferences from objective facts.
वो भी मैं उनको भी फैक्ट समझने लग पड़ता हूँ. एंड स्पेशली इन सोशल सोशल साइंसेस, इसमें ये हो जाता है कि हम बहुत सारी चीजें जो है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि जो पूरी इकोनॉमिक थ्योरी है पूरी की पूरी, उसमें एक फैक्ट की हैसियत से एक अजम्पशन मान ली गई और उसको बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं किया गया कि मैन इज रैशनल. ठीक है जी. इसको आके अभी बिहेवियरल जो इकोनॉमिक्स में डैनियल कैनमन ने आके फिर ये कहा कि नहीं, अक्सर औकात तो नहीं होता रैशनल वो. तो वो जो पूरी की पूरी थ्योरी है इकोनॉमिक्स की हमारी, वो असल में उसकी बुनियादों में एक अजम्पशन है. वो अजम्पशन को उसने बताया और उस पर उसको नोबेल प्राइज भी मिल गया जी. वो जो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, इट्स अ वंडरफुल बुक, वर्थ रीडिंग. इंशाल्लाह मैं उसको जरूर रिकमेंड करूंगा जी. आप लोग अगर टाइम मिले तो जरूर देखिएगा. और दूसरी किताब उसकी फिर अभी आई है नॉइज के नाम से, कुछ देर हो गई है. अच्छा जी, हम वी विल हैव मोर टाइम फॉर क्वेश्चंस इंशाल्लाह. ये बताइए कि इस पे अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलें जी इंशाल्लाह. जस्ट अ कपल ऑफ स्लाइड्स टुडे please एंड देन go वी ahead. कैन. Yes. राइट जी, बिस्मिल्लाह. अच्छा जी, critical reflection basically has four things to offer. ठीक है जी. Identifying the assumptions that frame an idea, opinion, thought, and influence action. Number two, checking out the degree to which these assumptions are accurate or valid. ठीक है या नहीं ठीक है. Number three, looking at ideas and decisions, चाहे वो intellectual हो, organizational हो, personal हो, from different perspectives. मैंने एक फैसला किया है, हाउ इज दैट डिसीजन सीन बाय माय ऑडियंस फॉर इंस्टेंस. मैं इसके अंदर आपको एज वी मूव फॉरवर्ड एंड वी स्टार्ट कवरिंग सम टॉपिक्स, आई विल बी यूजिंग अ टूल कॉल्ड it's called critical uh, incidents questionnaire, because I have certain assumptions about how to frame these sessions, and these assumptions are not realities, these are not facts. Hmm? Because of that, my assumptions can sometimes be very wrong as well. And by getting that feedback from you through my CIQ, whatever I will be presenting you with, it's known as critical incidents questionnaire. तो वो जो critical incidents questionnaire मैं आपसे request करूंगा कि fill कर दें. It will not take more than 5 minutes if you will just focus on that. Or inshallah, that will give me ideas to reframe my sessions in the future as well. तो ये क्या है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कुछ assumptions हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको वो कैसी लग रही है बात. ठीक है जी. How is it being received by you? So that is trying to take a different perspective. Likewise, if you are taking a decision at your household, so what can you do? How will your son feel about it? How will your spouse feel about it? These are different perspectives. And on the basis of the above, taking informed decisions and actions, ये हमारा बेसिक टारगेट है. इसलिए जब मैंने इसकी बात की थी तो मैंने ये कहा था कि one of the basic ingredients, one of the basic inputs in developing good decision making skills is critical reflection. Critical reflection does not have anything to do with criticism. ठीक है जी, ये बिल्कुल क्लियर रखिए. It is a different thing. Criticism नहीं है ये. It is just reflecting in a critical way. If you have any questions about these points, please let me know. कोई सवाल हो इस चीज के बारे में, हम इनको अब प्रैक्टिस करेंगे जी. हम इनिशियली जो मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा वो पहला पॉइंट है सिर्फ. ठीक है जी. इनफैक्ट Before पहला you और move दूसरा. यस यस forward, can you comment on informed decision? जी. आई मीन वेल कंसिडर्ड decision, that is what I meant over here. It should not be an instinctive or impulsive decision. We should take a decision on the basis of what we have done in the previous 3 steps. मुझे बल्कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन से बड़ा हार्श एक्सपीरियंस हुआ क्वाइट रिसेंटली. अगर आप कहते हैं मैं शेयर कर देता हूँ ब्रीफली इन जी 30 सेकेंड. मैं वो कार की शॉपिंग कर रहा था तो एक आदमी से फोन पे बात हो रही थी, तो वो मुझे एक तरह से फोर्स करना शुरू कर दिया कि मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, प्राइसेस ज़्यादा जा रही हैं और ये फर्दर डिले होगा, चिप्स की प्रॉब्लम है. उसने सारी इकोनॉमिक सिचुएशन मेरे सामने रख दी और एट द एंड पूछता अच्छा बताएं बुक करूं. मैंने कहा यार देखें अभी तो मैं शॉप अराउंड कर रहा हूँ एंड
और मैं अभी डिसाइड करूंगा मैंने एग्जैक्ट यही टर्म इस्तेमाल किया, मैं इन्फॉर्म डिसीजन पहुंचना चाहता हूँ आफ्टर collecting information. He was so angry. He said, "You don't believe in me? I have 20 years experience. I tell you all. I have MBA." I say, "Dad, I also have MBA, but even I don't rely on my MBA all the time. It's not my profession." बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल जब हम सर्जरी करते हैं ना तो जी हम कंसेंट साइन कराते हैं पेशेंट से. तो राइट what we take the consent, and that consent is based on the informed decision capacity of the patient. तो हम उसको राइट इंफॉर्मेशन देते हैं कि इसके रिस्क क्या है, बेनिफिट क्या है, व्हाई दिस सर्जरी इज इम्पोर्टेंट, व्हाट कुड बी द अल्टरनेटिव, एंड देन विदाउट बीइंग जजमेंटल वी लीव द डिसीजन ऑन द पेशेंट कि भाई तुम्हें करानी है कि नहीं करानी है. तो informed बिल्कुल decision. Similarly, if you are going to get a credit card or open an account, then you should be informed कि इसकी फीस कितनी होगी, क्या होगा, बिल्कुल प्लस पॉइंट क्या है, माइनस. बिल्कुल दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्म डिसीजन कैपेसिटी. तो राइट इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आएगी, यानी जनरल पब्लिक में मैं पूछ रहा हूँ. जी नहीं अभी यहाँ पर जो हम बात करें जी वो इन्हीं चीजों के बारे में कर रहे हैं जो अभी ऊपर हमने जिनके बारे में बात की कि आपका कोई एक्शन है कोई ओके. ओपिनियन है कोई राय है इसके बारे में इफ यू वांट टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कोई चीज आप लेना चाहते हैं कोई आप यू डिजायर टू बाय समथिंग ओके इवन दैट डिजायर टू बाय समथिंग how has that been created? You look at an advertisement and you try to see okay, what is the message of that this advertisement and how accurate is that, and do you really need it? Because there is another thing going on. Sometimes advertisements actually prompt us to do things that we don't need. They just first create a desire and a want in us and then push us to go ahead and do it. तो क्या चीज है ये जो इसका इसका यहाँ पर मतलब मेरा असल में ये है आई सी. that the decision should not be impulsive or based on hearsay. जिस तरह भी जमील साहब ने बताया, that's a very good example of that. That fine, I'm not saying that the person is lying, but what I want to know is through my own reflection whether I really need this vehicle or not. You know, this will be my decision rather than depending on others, totally depending on others to take our decisions. We will take a decision on the basis of the skill that we have developed in us to critically reflect on that, to take an informed decisions, to see the pros and cons of it, and then go ahead with it. ये idea. राइट. ठीक है जी. अच्छा जी. हंटिंग assumptions मैं ये आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ जी ये this is the core process now. Okay, this is what we will be doing. The core process in all critical reflection is hunting assumptions, trying to discover what our assumptions are, and then trying to judge when and how far these are accurate is something that happens every time critical reflection occurs. सबसे पहली ये बात कि assumptions हैं क्या और दूसरी ये बात कि वो accurate कितनी है. Okay जी. You cannot think critically without hunting assumptions. That is, without trying to uncover assumptions and assess their accuracy and validity. So, यूं समझ लीजिए कि the most important, the pivotal point that makes your thinking critical is from this perspective, obviously. And again, I would reiterate that we are not talking about criticizing anything. We are just talking about analyzing. Critical analysis भी कहते हैं इसको, critical thinking भी कहते हैं. These are the same terms. These are used interchangeably. Critical reflection, critical analysis, critical thinking. Now, what we will be doing in for the next 5-6 minutes is we'll see a small clip. मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको मैं आवाज़ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह आवाज आ जाए. The idea is that this clip is going to help you, you know, just give an idea कि हम किस तरह से इस काम को करते हैं. ठीक है जी. So when debating a friend, have you ever thought, their argument seems logical, but something seems off. Something about their argument is missing. If so, it is good to identify and analyze the assumptions of the given argument.
Many arguments, you see, include an unstated premise, a hidden assumption that bridges the gap from one premise to the next. By uncovering assumptions, we can better evaluate an argument's validity and reasoning. Here's an example. Pretend someone claimed, John has a law degree, therefore John has a lot of money. The assumption or unstated premise here is that everyone with a law degree has a lot of money. However, this premise is clearly false. Not all people with law degrees make a lot of money. In fact, some don't even practice law. Therefore, this is a weak argument. Here's another example. Pretend someone said, getting a degree in Russian studies is a waste of time because you'll never get wealthy from it. The assumption here is that if a degree doesn't get you wealthy, it is a waste of time. This premise, of course, can be critiqued. By revealing the hidden assumption in the statement, you now have a new angle to analyze the argument. Now it is your turn to identify the hidden assumptions or unstated premises in the following 8 arguments. मैं ये जो आपको When अभी debating a देने friend, लगा हूँ, have you ever ये जो टाइम है, आई एम सॉरी, आई शुड हैव टोल्ड यू, एक पैड और पेंसिल रख लीजिएगा अपने पास, जस्ट फॉर बेटर पार्टिसिपेशन. मैं आपके साथ ये जो अब आ रहा है अगला पार्ट, इसमें दे विल बी शोइंग यू सम आर्गुमेंट्स, और आपने ये देखना है कि इसमें से अजम्पशंस आप निकाल रहे हैं कि नहीं, निकाल पा रहे हैं कि नहीं. इंशाल्लाह इसको हम फिर डिस्कस कर लेंगे जी. Are we ready जी? Can we start? We'll need a paper and a pencil, okay? जी. Unstated premises in the following 8 arguments. You will have 20 seconds to write your answers for each. If you need more time, pause the video. Let's begin. Number 1. It is certainly worth the money. It is nearly 100 years old. Go. Number 2. Football causes injuries and is therefore not a sport we should encourage. Go. Number 3. Their relationship will never work. She is 15 years older than him. Go. Number 4. There is nothing wrong with using your cell phone in class. Other students do it all the time. Go. Number 5. His sister is a musician. She obviously has no money. Go. Number 6. Why did you expect him to be honest?
He's a politician. Go. Number 7. You should be able to say the word hell. I mean, it's in the Bible. Go. And number 8. Mike listens to country music. He is obviously from a small town. Go. जी बिस्मिल्लाह. आप ये कर पाए जी? यू वर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? They were simple statements. Any statements which you found problematic, let me know ji. We can review that even and see what others have offered. You can unmute yourself if you want to share, ji, please. Everything was okay. I mean, we understood the underlying assumptions. ठीक है जी, ये समझ में आ गई, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जी. तो हम यहाँ से अब what we will be doing is कि I will introduce you to 3 kinds of assumptions. They are very simple to understand, and one of them is slightly problematic, but मैं इंशाल्लाह आपके साथ थोड़ा सा लिटरेचर भी शेयर करूंगा उसमें, and hopefully that will clarify जी. अच्छा जी, ये जो assumptions हैं 3 किस्म की, वो बेसिकली ये हैं. कॉजल assumption है नंबर 1. कॉजल assumption ये बताती है कि cause and effect relationship बताती है. When there is a causal assumption, it actually means when we say assumption, keep in mind, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, an assumption can be true. It does not always mean that assumptions are wrong. Assumptions can be true. The only thing that we need to do is to find out, to just check whether they are right or wrong. Causal assumptions हैं, prescriptive assumptions हैं, जो मैंने आपसे अर्ज किया. They prescribe a certain way of doing things. This is how we should do it. This is how we should not do it. These are both prescriptive assumptions. And there is a paradigmatic assumption. Paradigmatic assumptions are the overall worldview kind of a thing about that concept. If you believe, if we are talking about education, what is your concept of education? Is it the behavioral model? Is it learning कैसे होती है? Is it the constructivist model? Is it the cognitive model? How would you approach learning? ये जो है ये paradigmatic assumption है. ये जब हम कहते हैं paradigmatic assumption, तो ये इस तरह की assumptions उसमें statements आ जाएंगी that for instance ये बात के people are good by nature. This is a paradigmatic assumption. People are bad by nature. They are dishonest by nature. Man is a social animal. Man is a socio-moral animal. All these are paradigms. और इसके ऊपर हमारी prescriptive assumptions निकलती हैं इसमें से. If man is a social animal, then man should live in groups. This would be the prescriptive assumption. And people living in groups
will be more secure in this jungle as compared to people living alone. This will be the causal assumption. ग्रुप्स में रहने से ये फायदा होगा. तो आप यूं समझ लें कि पैराडाइमेटिक assumption बेसिकली वो चीज है कि जिसके अंदर से आपकी प्रिस्क्रिप्टिव और causal assumptions निकलती हैं. The idea when you study something, when you read something, when you listen to something, the idea becomes more easier to digest or more easier to decipher if we look for causal and prescriptive assumptions. They're more express. Most of the time, they're more express. And from there, we try to derive the paradigmatic assumptions. यानी अगर मैं आपके साथ ये जो सारी बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ ये बात करने के बाद ये कहता हूँ कि ये हमें इस तरह से गौर करना चाहिए, ये सोचना चाहिए, ये जो मैंने सारे का सारा सेशन बनाया हुआ है, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि ये जो मैंने अभी एक्सरसाइज दी, ये जो अभी आपको एक ब्रेन टीजर दिया, ये असल में एंगेज करने के लिए दिया. इसका नतीजा ये निकला कि एंगेजमेंट जो है आपकी लर्निंग को मेरे हिसाब से बेहतर करती है, या आपकी इन्वॉल्वमेंट को बेहतर करती है, और इन्वॉल्वमेंट जो है वो लर्निंग को कंट्रीब्यूट. ये देखें कॉजल अजम्पशन बन रही है. मैं इसके बारे में जो आपके साथ आइंदा जैसे जैसे चलेंगे, स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस हो रही हैं, तो मेरी जो अजम्पशन है वो क्या बन रही है, व्हाट डू यू थिंक इज माय अजम्पशन? If you know about the various learning models, you'll see that it is basically social constructivist model, that we construct knowledge. It is not something given, it is not something objectively placed outside. एक टीचर जब बता रहा है तो जो कुछ बता रहा है, आपकी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, if you're into teaching you'll have this experience a lot. If 50 students are there and you're giving them or delivering a lecture, and one of them feels that you have said one thing and the other feels that you've said another thing, there is nothing different that you've told any of them. You've said the same thing to every one of them, but they have understood it differently, they have constructed it, they have perceived it. Maybe they were not attentive, maybe whatever, but this is something that happens very often in our teaching, and all teachers know about it. So these are the three assumptions, and we will be practicing that for the next few sessions as I suggested. मैं आपके साथ सिनेरियोज शेयर करूंगा, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वापस अपने उस टॉपिक पे आएं, कि ये देखें कि ये जो हमारी नॉर्म्स हम सजेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे हमारी क्या assumptions हैं, causal, prescriptive, paradigmatic, as a further exercise of that. मैं एक यहाँ पर आपके साथ I'm sharing a very brief statement. Oh, sorry. And I would like you to think about it. Can you point out any causal, prescriptive, paradigmatic assumptions from this statement? You don't have to agree or disagree with it. हाँ, बट डोमिनेंसी जो लग रही है वो प्रेस्क्रिप्टिव लग रही है कि people need to model the behavior. I mean, they should first behave themselves Right. in a way that they are expecting their children to behave in a certain way. Right. Now, this is a wonderful point. This is a very good. आपने इसको निकाला भी बिल्कुल ठीक है. ये जो words है ना जी, need to, should, ये जब किसी स्टेटमेंट में आ जाएं और स्टेटमेंट को आप इस तरह से पढ़ें, तो असल में वो जनरली प्रिस्क्रिप्शन दे रही है. एक स्टेटमेंट, पीपल नीड टू मॉडल, पीपल शुड मॉडल the behaviors which they wish to see in their children. And what is the causal assumption that you can, it is not given, it is not expressed, but it is implied. What is the causal assumption? Can you think about it? There's going to be no right or wrong answer. Just go ahead and say it. जैसे भी आपने फरमाया था कि people are behavior and behaviors can be bad or behaviors can be good. उसी को अगर अप्लाई कर लें तो हम बच्चों को उस सर्टेन बिहेवियर्स में उनमें वो इनकलकेट करना चाहते हैं जो हम समझते हैं कि हमारे सराउंडिंग में एक्सेप्टेबल है, या हमारी कम्युनिटी में या इस कल्चर में एक्सेप्टेबल है. वंडरफुल. और ये देखिए, इसमें जो बात, एक चीज
जो ये बता रहा है कि इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, यानी इम्प्लीकेशन ये है कि अगर मैं अपने बच्चों के सामने उन बिहेवियर्स को मॉडल करूं कि जो मैं उनमें देखना चाहता हूं, यानी उनको अपने अंदर पैदा कर लूं, तो वो बच्चों में भी पैदा हो जाएगा. कैन यू सी द cause and effect relationship? Do it yourself and your children will start doing it. If you do it, then your children will also do it. So see the cause and effect relationship as well. आता है जी कुछ ये सामने कि यहाँ पर उसने असल में जो कॉजल अजम्पशन आ रही है उसकी वो ये है कि आप जो करेंगे आपके बच्चे उसके मुताबिक ढलने शुरू, वो भी वही करना शुरू कर देते हैं. यानी आई एम नॉट सेइंग, अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि ये ठीक है या गलत है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये अजम्पशन है. जी जमील साहब. हाँ जी. मैं आपकी उस बात से अभी आप देखिए कि हाँ ये असम्पशन अभी हम बात नहीं करें सही है नहीं, तो मेरे ज़हन में ये ख्याल आ रहा था कि जो मैं अभी कर रहा हूँ और मैं अपने बच्चों में वो देखना चाहता हूँ, और कुछ चीज़ें इंटेंशनली मैं करता हूँ, लेकिन आई कुडंट सी देम डूइंग द सेम थिंग. सो वंडरफुल, बिल्कुल ठीक मेरे है. ज़हन में वही इफेक्ट्स आ रहे थे अभी फौरन, तो आई वांट ट्राई जी. टू कनेक्ट द डॉट्स. Right, right. ये अभी we are not talking about training of children, but this statement, in जी. this statement, if you look at this statement, the implication is that if you do something in a particular way, your children will start doing it. And there's a good evidence for that. You know, there's a lot of evidence for that. Children generally start speaking the language that you speak. They would start expressing themselves the way you do. आप कभी गौर कीजिएगा कि उनके जो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन के जो इजहार होते हैं ना, वो काफी आप अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं. How they I realized this one day when my son first started driving. The way he expressed his frustration on the road, और मैं ये सोच रहा था यार ये बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे मैं करता हूँ. So I should be more careful about it. So how we do it, how we model, sometimes consciously and sometimes unconsciously, it is taken up by our children many times, but not always. I totally agree. ये जो अभी आप बात कर रहे हैं कि मैंने इसको मॉडल किया और ये नहीं हो रहा, हम आइंदा इसको भी डिस्कस करेंगे कभी कि ऐसा क्यों होता है. एक स्टेज आती है जिंदगी में जब इन्फ्लुएंस एक नहीं रहता, ठीक है जी. बट देयर इज इनिशियल स्टेज जो है जिंदगी की बच्चों की, उसमें हमारा बड़ा क्लियरली बड़ा सिंगुलर किस्म का ना इन्फ्लुएंस होता है उनकी जिंदगियों पे. वो लैंग्वेज वही बोलना शुरू करते हैं जो उनके घर में बोली जा रही होती है. बट देन दे स्टार्ट पिकिंग अप वर्ड्स व्हेन दे स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, गेटिंग मोर एक्सपोजर, having a broader circle of interactions. This generally happens. And probably what you're talking about over here is that you're trying to model a behavior, but they're not being picked up. मैं इसमें भी हम इंशाल्लाह as we move forward we'll make a few suggestions कि क्या क्या करना चाहिए. अभी आपके ख्याल में इस स्टेटमेंट में ये assumption है कि if you do something in a particular way, if you wish that your children do something in a particular way, you should do those things yourself. बिल्कुल, आई मीन कॉज और ठीक है ना. इफेक्ट बिल्कुल रिलेटेड है ये. इंसान के बारे में क्या assumption है इसकी इस स्टेटमेंट में? That will be the paradigmatic assumption. Anyone, just think about it. The idea is that when you do something in front of those who are growing up, they generally pick up your behaviors and try to emulate you. What is this statement assuming about children? What is this statement assuming about you? I would say This that is a normal. हाँ जी. to जी. develop a good society, people should normally adopt good behaviors. Like, Mhm. All right. This would be more of a causal assumption, I think. For developing a good society, we need to improve our behaviors, cause and effect. ठीक है जी.
but think about it. And I would like to stress very strongly, ये जो अभी हमने अभी साइलेंस एक्सपीरियंस किया था जी, ये क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की क्लास का खासा होता है. हमारी क्लास ये जो होगी, ये उस स्कूल की नॉर्म से डिफरेंट होगी कि जिसमें जल्दी आंसर देना जो है वो इम्पोर्टेंट है. नहीं, क्वेश्चंस, आई मीन इफ यू आस्क मी, आई विल नीड टू stay quiet for a while, think about it, and say कि हाँ शायद ये assumption है. फॉर इंस्टेंस मेरे ख्याल में इसमें एक assumption ये है कि इंसान कॉन्शियसली अपने बिहेवियर्स को मॉडल कर सकता है. Man has the ability to consciously model his behaviors or change his behaviors. Number one. Number two, a child likes to emulate its elders. ये एक assumption है इसके अंदर. जी शकील साहब, प्लीज गो अहेड. नो जी नो अभी आप फॉर्मेलिटीज, आप just जी जी अच्छा अच्छा. एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले आपने एक लर्निंग थ्योरी का जिक्र किया था. जी लर्निंग थ्योरी जो है ना, वो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है उसका आपने जिक्र किया था. जी 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 और इसी तरह कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज होती हैं. तो जी कॉग्निटिविज्म जिसमें आप देखते हैं, सुनते हैं, कॉपी कैट जो आपने चिल्ड्रन की मिसाल दी. तो जो लर्निंग बिहेवियर है वो एडल्ट लर्निंग इज डिफरेंट देन द चाइल्डहुड लर्निंग. एडल्ट लर्नर राइट आर डिफरेंट देन द चाइल्ड. तो उनके लिए राइट अलग थ्योरीज और अदर अलग बनाई जाती हैं बच्चों के लिए. और बच्चों को ट्रेंड, आपने एग्जांपल दी थी कि बच्चे देख रहा है कि अब्बा नमाज पढ़ रहे हैं, अब्बा इस तरह बोल रहे हैं, माँ इस तरह खाना पकाती है, तो वो लड़कियां वही सीख जाती हैं. वो तो बच्चे हैं, राइट लेकिन जो एडल्ट है दे लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस एंड दे राइट. कंस्ट्रक्ट, दे हैव एन एबिलिटी. तो ये पॉइंट भी, लर्निंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट एज ग्रुप. बिल्कुल जी, बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें एक 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 चीज कॉमन है जी, वो मैं आपसे अर्ज करता हूँ. यानी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है. वी वी टेंड टू लर्न जनरली फ्रॉम, चिल्ड्रन टेंड टू लर्न जनरली थ्रू ऑब्जर्वेशन, experiencing, these are very important learning tools for children. uh, there's one thing which is quite common. मतलब मैंने जब भी देखा इसको, जब भी, क्योंकि ये मेरे लिए एडल्ट लर्निंग एक खास टॉपिक रहा है जी, वेरी इंटरेस्टेड इन दैट. कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो दैट गोज फॉर बोथ. ठीक है जी. चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज. ये पियाजे की थ्योरी थी बेसिकली, अर्ली 1900s में, जब इसने ये काम किया था. बेसिकली व्हाट ही, उस वक्त ये टर्म नहीं बनी थी जिसको हम कहते हैं आज, हम जिसको कहते हैं डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्टिविस्ट, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट नहीं था वो कंस्ट्रक्टिविस्ट, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट था. यानी आइडिया ये है, कंस्ट्रक्टिविज्म का आइडिया बेसिकली ये है कि नॉलेज कोई बाहर पड़ी हुई चीज नहीं है, बल्कि हम उसको इंटरनलाइज करते हैं और उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, असिमिलेट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं. ये वो पियाजे की टर्म थी कि अपनी मौजूद इंफॉर्मेशन के साथ उसको कंबाइन करते हैं और फिर उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं और चीज़ों को बिठाते हैं. गलत भी बिठा सकते हैं और ठीक भी बिठा सकते हैं, लेकिन जब तक वो बैठेंगी नहीं, लर्निंग हो नहीं रही. यानी लर्निंग प्राइमरीली हमारी ये इसकी मैं आपको अगर मिसाल दूं तो, इंसान ये क्यों है मेरे लिए, ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, और व्हाई डू आई एम बेसिकली, I like following this constructivist developmental psychology, constructivist developmental approaches to learning. I mean, I'm quite fond of them, more inclined towards them. The reason is that I believe that basically, whatever we are today, we have constructed something about it. मैं तो इसको यहाँ तक कहता हूँ कि even faith is of no value unless it comes in our everyday constructions. ये जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक फेथ एक रिडंडेंट चीज है, उसकी जरूरत नहीं है हमारी जिंदगी में. यानी फेथ एक एक्स्ट्रा चीज बन जाएगी. When does faith become a part of our constructions?
वो जब तक होता नहीं है वो मेरी जिंदगी से रिलेट नहीं करेगा। ठीक है जी। तो आपने कई लोग सुने होंगे, देखे होंगे, एक्सपीरियंस भी किए होंगे कि जिनकी जिंदगी में फेथ वो कहते हैं, हम सब कहते हैं, लेकिन लेकिन बहुत ज्यादा याद नहीं रहता। ठीक है जी। वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन का हिस्सा नहीं बन सके। हम उस लेंस के थ्रू अभी देखने की आदत नहीं पड़ी। पड़ जाएगी इंशाल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि अगर नहीं हुआ तो जिंदगी ने अगर मौका दिया है, अल्लाह ताला ने अभी तक फैसला नहीं किया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है हो जाएगा। लेकिन ये कि जब तक वो होगा नहीं, आप फेथ की जिंदगी गुजार नहीं रहे। बेसिकली दिस इज व्हाट आई फील, दैट इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन, and unless, and that is, I mean, you have constructed this in your mind, that fire, no matter how big a flame or a smaller flame, it burns. And पिछले दिनों my daughter was celebrating her son's birthday, and she panicked, she shouted, ओए क्या कर रहे हो, ये when he approached the candle, अपने हाथ से वो कर रहा था. So that's a very good, I mean, idea. I mean, looking at it, it tells you that how your faith, that a candle will always burn, you know. आज तक बर्न करती रही है. एक्सपीरियंस ये है कि मेरी आज भी बर्न करेगी. ये जो बात है ये कैसे कितनी ट्रू है ना. और वही जब फेथ में आपकी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा बन जाए और एक लिविंग कंस्ट्रक्शन बन जाए, तो ये चीज पैदा हो जाती है. तो ये मैं इस आइडिया को ठीक समझता हूँ, और आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं बच्चों की एजुकेशन में, बड़ों की. इस चीज को मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, इसमें बहुत बहुत कुछ लिखा गया, बच्चों का भी मैंने देखा, प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, इवन इवन इन्फेंसी में भी, कि वो चीज़ों को किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, किस तरह से चीज़ें याद आ रही होती हैं उनको, और दे स्टार्ट, कलर्स किस तरह याद होने शुरू हो जाते हैं, और ज़रा सा चेंज आए तो वो उसके बारे में क्या रवैये होते हैं. तो and walking, talking, communicating, everything, uh, it seems so clear that they are constructing their whole set of information that they are gathering from around them, that it becomes very intriguing. फिर इंसान जब बड़ा होता है तो फिर भी यही चीज चल रही होती है. और इसमें सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म ये है कि बिकॉज वी आर सोशल बीइंग्स, हमारी, जैसे मैं और आप इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. और जब आपसे मेरी गुफ्तगू हो रही है तो मेरी कंस्ट्रक्शंस भी रिव्यू हो रही हैं और आपकी कंस्ट्रक्शंस भी रिव्यू हो रही हैं और रिफाइन होती हैं इस तरह से. ये लाजिम नहीं है कि दोनों के एक ही लेवल पे हों, और ये भी लाजिम नहीं है कि हम दोनों एक ही नतीजे पे पहुंचे, लेकिन अपनी अपनी कंस्ट्रक्शंस लेकर हम इससे बेहतर होकर निकलेंगे इंशाल्लाह. ये वाला आइडिया है जी. एंड इट इज़ अ वेरी इंट्रीगिंग आइडिया. हम असल में जो हमारी पूरी की पूरी एजुकेशनल सेटअप्स हैं, वो किस तरह से इसको प्रमोट कर सकते हैं. तो एज वी मूव फॉरवर्ड इन दिस, आप इसको देखेंगे इंशाल्लाह कि मेरी इस अप्रोच में ये सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म भी काफी नजर आनी शुरू हो जाएगी आपको. जी, एनीवन एल्स जी, कोई कमेंट, कोई बात करना चाहें, मोस्ट वेलकम. हमारे पास टाइम अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया जी. तो इधर हम रोक लेते हैं, फिर आपकी तरफ से अगर कोई बात आप करना चाहें तो मोस्ट वेलकम जी, बिकॉज वी हैव अ कपल ऑफ मिनट्स, आई थिंक 2 minutes. यस. अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच. शकील साहब आपका बहुत शुक्रिया. जमील साहब, सिद्दीका आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑल. एंड सलमा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया जी. आई एम सॉरी आप मैं देख नहीं पा Thank you रहा very था. much, Moiz जी Saab. जी, Nice meeting थैंक यू जी. and very nice प्लेजर talk. जी, प्लेजर. I enjoyed that. Thank you very much जी. Thank you very much sir, and hopefully we'll be seeing you next time इंशाल्लाह. मैं Inshallah. आपके साथ अभी जी ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ. एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, सिंगल नहीं, कपल ऑफ पेजेस ओनली, which will explain a bit about causal, prescriptive and paradigmatic assumptions. ठीक है जी. Okay. इंशाल्लाह हम इस पर आगे गुफ्तगू करेंगे. थैंक यू सो मच जी. जज़ाकल्लाह. Thank you. Have a good night. Assalamu Thank you. alaikum.